क्या हम शुरुआत कर सकते हैं आज के सत्र की? थैंक यू सर। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ज्ञान गंगा के इस 104वें सेशन में। मैं डॉक्टर पूनम वाजपेयी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की संपूर्ण टीम की ओर से यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय अतिथिगण, आदरणीय गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, आदरणीय गुरुजन, सभी शिष्य और सोशल मीडिया पर इस सत्र को लाइव देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी आरएवी, आदरणीय वैद्य श्री मनोज देसी जी, आयुर्वेद सलाहकार, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्हें इनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, अपार सहयोग एवं निरंतर प्रेरणा के लिए सभी की ओर से धन्यवाद एवं सादर प्रणाम करती हूँ। आज का यह 104वां सत्र बहुत ही खास सत्र है क्योंकि आज एक टॉक शो का आयोजन किया गया है जिसमें कि हमारी ATAB एक्सपर्ट डॉक्टर विशाखा बहारी मैम, जो कि आरएवी में डोमेन एक्सपर्ट के पद पर सेवारत है, आज हमें ATAB अर्थात आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेगी। और आयुर्वेद ATAB क्या है, इस बोर्ड की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है, इस विषय पर आज हमें उचित जानकारी देकर मार्गदर्शन करेंगी। ATAB यह हमारे माननीय सेक्रेटरी वैद्य श्री कोटेचा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक नया इनिशिएटिव है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देशों में एवं विदेशों में जो भी आयुर्वेदा के कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें एक्रेडिटेट करना अर्थात उनका प्रत्यायन करना। उन कोर्सेज को यह बोर्ड एक्रेडिटेट करेगा जो कोर्सेज IMCC एक्ट 1970 और NCISM एक्ट 2020 के तहत रेगुलेट नहीं होते। और इस तरह के कोर्सेज की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा की गई है और इस बोर्ड का संपूर्ण कार्यभार आरएवी द्वारा किया जा रहा है। इस बोर्ड के बारे में, इसकी कार्यशैली के बारे में सही जानकारी आप तक पहुंचाना आज के इस टॉक शो का मकसद है। तो आइए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए आज के इस टॉक शो का प्रारंभ करते हैं। सत्र के अंत में आप इस विषय से संबंधित जो डाउट्स या क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं और सभी से अनुरोध है कि वे अपने माइक एवं वीडियोस ऑफ रखें। अब मैं आदरणीय श्री N रामकृष्णन सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आरएवी, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर एंड वेलकम। Thank you. Good afternoon, everyone. Welcome to this new session of 104th session of Gyan-A. I welcome Padma Bhushan Triguna ji, our advisor, Manoj Desri sir, and all Gurujan and all our students. And other than that, there are some few experts of ATAB has also joined. I welcome all of them for this special session. एक महत्वपूर्ण ये बात है, ये सेक्रेटरी साहब ने एक आइडिया दिया था, ऐसे एक एक्रेडिटेशन बॉडी बनाना चाहिए और जो आयुर्वेद कोर्सेज जो है उसका एक्रेडिटेशन होना है। तो एक्रेडिटेशन होना है और उनका सरलता से होना है, आसानी से होना है और ज़्यादा उनके ऊपर मतलब ये रेगुलेटर का मापदंड वगैरह वो लेके नहीं जाना है, उनका अपना आप ईज में होना चाहिए, वर्क एट ईज जैसे होना चाहिए करके एक हमें ये दिया था। उसका अनुपम जी का नेतृत्व में जो टीम थी, आरएवी का टीम थी, प्लस जो एक्सपर्ट्स फ्रॉम NABH, QCI, देन अदर एक्सपर्ट्स NCIS से सारे एक्सपर्ट्स का टीम बना के और जो गवर्नमेंटल एक्सपर्टीज है उनको भी लिया था, जिनका एक्रेडिटेशन एक्सपर्टीज है उनको भी लिया, उनको लेके पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है ATAB का। ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और ये हमारा वेबसाइट में भी आ गया। मगर प्रॉब्लम ये है, वो ये जो गाइडलाइंस या लॉ जो भी बनता है उनका अंग्रेजी एक अपना स्टाइल में होता है। ये थोड़ा लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। ये दूर करने के लिए आज का मेन मकसद ये था, हम जैसे ये सरल हिंदी में हम अपना गुरुजनों को और भारतवर्ष में जो देखते श्रोता देख रहे हैं, आज का जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और उनको जितना सरल से हम ले जाएंगे, उसका मकसद भी ये। मतलब इसका हमने बोला था, हमारा जो कंसल्टेंट है विशाखा बारी, तो मतलब उनका माइंड में एक आइडिया था, जैसे हमारा जो ज्ञान गंगा प्रोग्राम चलता है वो वैसे PPT बना के बनाते हैं, तो वो एक तरीका होता है। अगेन PPT बना के करते हैं तो दोबारा वो एक क्लासरूम स्टडी जैसे हो जाता है। तो फिर एक अनोखा तरीका हमने ढूंढा है, जैसे हमारा
सारे जानते हैं हमारा जो दूरदर्शन टाइम पे जो क्वेश्चन आंसर स्टाइल्स होता था, और जो भी कठिन से कठिन जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज को एक्सप्लेन सरलता से होती थी ताकि आम आदमी तक पहुंचे, ये मकसद होता है। तो उसी मकसद से आज एक नया चीज आरएवी का जो टैलेंटेड टीम आरएवी का, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ माय टीम। तो ये टीम एक नया कार्यक्रम शुरू किया, मतलब इससे इंटरव्यूज के डिस्कशन शुरू किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे सीनियर्स का आशीर्वाद बच्चों के ऊपर होना चाहिए, ताकि कोई गलती कर दे तो उनका मतलब ज़्यादा ये नहीं है, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर अमेटर्स, बट उन्होंने बहुत अच्छा एक देंगे, मुझे उम्मीद है, बिकॉज मैं अपने टीम पे गर्व करता हूँ, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऑलवेज। मैं अभी ओवर टू पूनम एंड आई ऑल द बेस्ट टू विशाखा एंड अनन्या। थैंक्स। पूनम। यस, ये क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन का शब्दों के लिए। अब मैं डॉक्टर विशाखा भारी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आज के इस टॉक शो की शुरुआत करें। और इस शो का आज के इस टॉक शो का होस्टिंग करने जा रही है डॉक्टर अनन्या रोहतगी। शी इज वर्किंग एज यंग प्रोफेशनल एट आरएवी। ओवर टू यू ऑन एंड प्लीज स्टार्ट। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनन्या राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ओर से आप सबका ज्ञान गंगा के इस विशेष सत्र में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आरएवी बहुत सी नूतन गतिविधियों में माइक ऑन कर लो अनन्या, माइक। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनन्या राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ओर से आप सबका ज्ञान गंगा के इस विशेष सत्र में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आरएवी बहुत सी नूतन गतिविधियों की पहल आयुर्वेद जगत के कल्याण के लिए करता रहा है एवं हाल ही के घटनाक्रमों में आरएवी ने प्रत्ययन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि भारत सरकार ने एक अधिसूचना के तहत आरएवी को प्रत्ययन संस्था यानी एक्रेडिटेशन एजेंसी के रूप में घोषित किया है। इसके अंतर्गत आरएवी ने आयुर्वेदा ट्रेनिंग एंड एक्रेडिटिंग बोर्ड यानी एटीएबी की स्थापना की है। इस विषय में विस्तार से जानने के लिए एवं सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर विशाखा भारी, नोबेल एक्सपर्ट, एटीएबी राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ से। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू डॉक्टर नादिया। मैम, हम सीधे सवालों की ओर बढ़ते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि एटीएबी यानी क्या? ATAB यानी आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड। भारत सरकार ने अधिसूचना के तहत आरएवी को एक्रेडिटेशन एजेंसी के रूप में घोषित किया है। ये उन आयुर्वेदिक कोर्सेज को एक्रेडिटेट करेगा जो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर नहीं आते। मैम, हम जानना चाहते हैं कि सरकार का इस बोर्ड को अस्तित्व में लाने के लिए क्या विचार प्रक्रिया रही? क्या करना है? वेबिनार है क्या कर रहा है ये? खोल लेगी किसी को बुलाए ना वेबिनार में बस।
जांच करते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं जाएगा जांच करने के लिए, बट हाँ क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें चेकलिस्ट अवेलेबल है। आप उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने कागज भरते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या क्या डिक्लेरेशन उस पर देनी है। बिकॉज आप वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि आप बेसिक एक्रेडिटेशन के लिए तैयार हैं। तो वो डिक्लेरेशन का प्रोसीजर जो है हम उन सिर्फ कागजों की ही जांच करेंगे। मैम एक सवाल और मन में आता है, क्या ये एक्रेडिटेशन केवल भारतीय इंस्टीट्यूट्स के लिए है कि जो भारत का निवासी है उन्हीं के लिए है? ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है मैम। विश्व भर में कोई भी कहीं पे भी इस कोर्स को रन कर रहा है या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो इस पे इनरोल कर सकता है। वो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन में भी जा सकता है, बेसिक एक्रेडिटेशन में भी जा सकता है। सेल्फ में भी जा सकता है, बेसिक एक्रेडिटेशन में। पर बेसिक एक्रेडिटेशन पे जाने के लिए क्या ये है कि वो डायरेक्ट बेसिक एक्रेडिटेशन में जा सकता है? जी मैं आपको बताना चाहूँगी ये लेवल 3 है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके बाद हमें एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट कह लीजिए वो मिलेगा। इसकी अवधि 3 साल है, बट इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कागज और आपका मैन पावर ये सब व्यक्तिगत रूप से चेक करेगा। आपके जो भी असाइन टीम होगी असेसर्स की ATAB की तरफ से वो आपका इंस्टीट्यूट या आपका एरिया विजिट करेंगे। फिजिकली हर चीज़ चेक होगी। उसमें वो लोग जो आपने पेपर सेल्फ डिक्लेरेशन में सबमिट किए या आपने डायरेक्ट बेसिक एक्रेडिटेशन में जमा किए वो सब चेक होंगे और उसके हिसाब से जो भी रिपोर्ट बनेगी असेसर्स के हिसाब से उसके हिसाब से आपको बेसिक एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है मैम। एक मैं मुद्दे को वापस पीछे लेके जाना चाहूँगी। आपने बताया कि विश्व भर के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने देखा है अमूमन तौर पे कि बहुत सारे लोग बहुत तरह के कोर्सेज चलाते हैं, जैसे आयुर्वेदा एंड योगा, आयुर्वेदा एंड म्यूजिक, आयुर्वेदा एंड डांस। तो इन सब को भी क्या ATAB प्रमाणित या मान्यता देता है? जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर नरिया, हम सिर्फ आयुर्वेद क्षेत्र को ही केटर करेंगे। हम सिर्फ आयुर्वेद के कोर्स को ही लेंगे। हम जो भी आपके जैसे आपने बोला 2 कोर्सेज कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहा है या एक सिंगल कोर्स में आयुर्वेदा और योगा दोनों है तो हम सिर्फ आयुर्वेद का भाग ही चेक करेंगे। किसी भी स्तर पे हम सिर्फ आयुर्वेद पार्ट ही चेक करेंगे, हम कोई और पार्ट को टच नहीं करेंगे। जैसे कि नाम क्या है तो ये हम नाम को ही साबित करते हैं आयुर्वेदा ट्रेनिंग एंड एक्रेडिटेटिंग बोर्ड, तो केवल आयुर्वेदा से हमारा लेना देना। बिल्कुल आयुर्वेद को ही हम मान्यता दे रहे हैं, आयुर्वेद के कोर्स को ही हम मान्यता दे रहे हैं। तो अगर हमारा मिक्स्ड कोर्स का भी आता है उसमें से भी हम आयुर्वेद पार्ट को ही लेकर उसी का सिलेबस लेकर उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर ही हम उसको एक्रेडिटेट करें। ठीक है मैम। जैसे कि अभी हमने एक छोटे तौर पे ऊपरी तौर पे तीसरे चरण के बारे में कुछ आपने हमें बताया, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वो पहला चरण पहला मेन एक्रेडिटेशन है जिसमें किसी कोर्स को एक मान्यता दी जाएगी, राइट? तो उसमें क्या क्या कागज हैं, कैसे कैसे उसमें अपना नामांकन करा सकते हैं, उसके बारे में बताएं। जी देखिए वैसे तो बेसिक एक्रेडिटेशन का जो लेवल 3 है वो एक मेन लेवल है। आपके जो हमारी बुक वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो PDF अवेलेबल है, आप जब उसको देखेंगे उसमें स्टैंडर्डाइज चैप्टर्स हैं, उस पर उनकी चेकलिस्ट अवेलेबल है। आप उन मापदंडों को जब कवर करते हैं, आप उस लेवल तक जाते हैं, वो पेपर्स हमें मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर असेसर टीम उसको असेस करेगी, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपकी साइट करेगी, उसके हिसाब से ही आपको बेसिक एक्रेडिटेशन में मूव करना पड़ेगा। बट क्योंकि इसकी अवधि 3 साल तक है, इसका बीच में भी एक असेसमेंट सर्वेलेंस कह लीजिए जो असेसमेंट होगा, ताकि आप जो भी आप क्वालिटी प्रमाण दे रहे हैं हमें उसको मेंटेन कर रहे हैं कि कर रहे हैं, वो भी वो 3 चेक करने जरूर है। तो मतलब यह है कि भीड़ नहीं बरतनी है, जिसने ये चलाया है उनको वही मापदंड क्वालिटी मेंटेन कायम करके रखना है। बिल्कुल। ठीक है मैम। तो मैम यदि एक मान्यता के प्राप्त हो जाने के बाद कोई सर्वेलेंस टीम आती है और उनको कुछ त्रुटियां मिलती हैं तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए जब हम सर्वेलेंस की बात करें, हम वहाँ पे अगर हमें कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ डेफिशिएंसीज मिलती हैं, असेसर्स बताते हैं आकर ATAB बोर्ड को, उसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको अवधि दी जाएगी उन त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए। अगर आप उस अवधि के भीतर उस त्रुटि को पूर्ण कर देते हैं, रिपोर्ट सेटिस्फाइंग रूप में आती है असेसर के सामने, तो आपका एक्रेडिटेशन का लेवल मेंटेन रहेगा, वो चलता रहेगा सर्टिफिकेशन। परंतु अगर
फाउंडेशन हमारा 4th लेवल है। इसमें टेलर मेड कोर्सेज हैं RAB के द्वारा डिजाइन किए। इसमें कुछ कोर्सेज ऑलरेडी हमारे इन्वॉल्व हैं, कुछ भावी भविष्य में आने भी वाले हैं जो हमें लगता है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। आप जानते हैं विदेशों में बहुत जगह पर हर्बोलॉजी या हमारी टर्मिनोलॉजी को लेकर बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो नाम भी उनके ऐसे दिए हैं ताकि उनकी जगह पर भी कभी सर्टिफिकेशन हो या कभी हमें वहाँ पर कुछ कोर्स करना हो तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें जो अभी 6 कोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो चल रहे हैं, वो भी स्तर में हैं। इन 6 कोर्सेज का मैं नाम बताना चाहूँगी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, डायटेक्स, DT, मर्मा, पंचकर्मा एंड पंचकर्मा थेरेपिस्ट और आयुर्वेदा हेल्थ काउंसलर। तो मैम जैसे कि आपने नाम बताए, पर ये बहुत ही अलग अलग, इनका दायरा बहुत बड़ा है। एक पंचकर्मा है, एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट है, एक मर्म है, एक ब्यूटी है, तो इन सब के दायरे बहुत अलग है और संभावित है कि इनके जो कोर्स डिफाइन होगा, पाठ्यक्रम डिफाइन होगा, वो भी बहुत अलग है। पर आपने कहा कि इनमें 20 साल हैं, तो क्या आप ऊपरी तौर पे हमें बता पाएंगे कि इनके क्या स्तर हैं? जी, संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारे कोर्सेज अभी चल रहे हैं उनको हमने मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो 200 घंटे का है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है। आगे हम बता सकते हैं, आपको भी डिटेल हो जाएगा। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी कोर्स। प्रोफिशिएंसी कोर्स हमारा है 500 घंटे का और उसके बाद है हायर प्रोफिशिएंसी कोर्स जो है 800 घंटे का। जब हम जो हायर प्रोफिशिएंसी कोर्स है वो सिर्फ आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। पर बाकी जैसे पंचकर्मा टेक्नीशियन है या इंट्रोडक्टरी कोर्स है उसके लिए हम 10+2 भी लेते हैं। डिजायरेबल एलिजिबिलिटी 10+2 जी। आगे भावी भविष्य में भी और कोर्सेज आने वाले हैं जैसे लाइफस्टाइल काउंसलिंग या आयुर्वेदा हर्बल फॉर्मुलेशन डिस्पेंसिंग, ऐसे भी कोर्स आने वाले हैं। बिकॉज हम चाहते हैं ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ग्लोबली इस चीज़ को लोग करें, वो चीज़ ऑफ करें, ताकि उनको फ्यूचर में अपने प्लेसमेंट्स के लिए भी हेल्प मिले, टीचिंग भी हो, आगे वो इस चीज़ में आगे बढ़ पाए। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया, हमने पीछे भी अभी बात करी, हमारे बहुत से ऐसे विशेषज्ञ हैं या फिर हमारे ऐसे बहुत से गुरु हैं जो कई सालों से जी बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं, उन लोगों को इन सबका ज्ञान है, वो लोग बहुत तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो क्या वह सीधे विदाउट पहले चरण दूसरा चरण में लिस्ट हुए बिना, सेल्फ डिक्लेरेशन दिए बिना सीधा तीसरे चरण की ओर बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं मैम। देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 इज योर प्रिपरेशन। आपको तैयारी करने के लिए मौका मिलता है, आपको समझने के लिए मौका मिलता है कि आपने अच्छा इस स्तर में हमें लिस्टिंग करी तो हमने ये हमारी फुलफिलमेंट थी। लेवल 2 में हमारे को ये फुलफिलमेंट थी, क्योंकि लेवल 2 में चेकलिस्ट है तो आपको समझ में आता है अच्छा आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, हमें इससे आगे ही थोड़ी एक्सपेंशन करनी है। जब हम लेवल 3 की तरफ आपको डायरेक्ट भर भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जो स्टैंडर्ड्स लेवल 3 में दिए गए हैं या जो चेकलिस्ट हैं आपको उनको फुलफिल करना है, तभी आप उसको पार कर पाएंगे। जी, तो मैम ये कहने का अर्थ है कि एक पहले चरण दूसरे चरण को करे बिना तीसरे चरण की तरफ बढ़ा जा सकता है जी, बट तीसरे चरण को करे बिना फिर चौथे चरण में जाना पॉसिबल नहीं। वो मैम देखिए मैंने आपको बताया वो एडवांस कोर्सेज हैं। जब आप RAB के डिज़ाइन कोर्सेज को लेते हैं तो आपको उसके हिसाब से ही चलना है, आप अपना कोर्स नहीं लेंगे, आप RAB के जो डिज़ाइन कोर्सेज हैं आपको करिकुलम भी उस हिसाब से लेना है, आपको बैच भी उस हिसाब से लाना है, आपको शिक्षक भी उस हिसाब से चाहिए, क्योंकि वो टेलर मेड है, वो एडवांस्ड एक्रेडिटेशन है। सो दैट लेवल आप तभी ले पाएंगे जब आप RAB के हिसाब से उस कोर्स को डिज़ाइन करेंगे। हमें अपना कोर्स जो गाइडलाइंस RAB की वेबसाइट पे मौजूद है उसके हिसाब से करना, उसके हिसाब से करना होगा। ठीक है मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी जो अभी अंडर प्रोसेस है, राइट, अब बहुत से हो सकता है विशेषज्ञ आज हमारे साथ नहीं जुड़े हों या फिर बहुत से चिकित्सक हों जो सोचते हों कि हाँ भावी भविष्य में मैं ये कोर्स चलाना चाहता हूँ या मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये जानकारी और ये दिशा निर्देश क्या पब्लिक पोर्टल पे इजीली अवेलेबल है, क्या हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, उस पर थोड़ा सा। जी, अभी फिलहाल तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में RAB की वेबसाइट पे पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ लगे, कुछ परेशानी है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप हमें कनेक्ट कीजिए, ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। जी मैम, हमने सबकी बात करी, हमने प्रशिक्षण देने वालों की बात करी, हमने संस्थाओं की बात करी,
कोर्स को करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन देगा। कोई जो लोग बाहर हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अगर हम भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स को करते हैं और फिर हम बाहर लेते हैं या हम कहीं पर भी जॉब अप्लाई करते हैं, तो उसका अप्रूवल या उसकी वेटेज हमेशा ज़्यादा हो जी, बिकॉज वो एक मान्यता प्राप्त भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है जी, तो हमारे को उससे हमेशा मदद मिलेगी। आपकी ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट्स, आपके वैल्यूएशन, वो सब चीज़ें उसमें हेल्प ही करेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग शुरू कर रहे हैं, नेशनली भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी उनको हेल्प मिलेगी प्लेसमेंट्स के लिए। तो इसका मतलब है कि जो भी चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो, यदि वो कोई कोर्स करता है जो कि ATAB द्वारा मान्यता प्राप्त है जी, तो उसका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक वैल्यू एडिशन होगा, उसका एक संवर्धन होगा, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी होगी जी। जैसे कि हमारे आदरणीय PM नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक विजन है कि आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है जी। तो ATAB का ये जो स्टेप है बहुत सराहनीय है मैम, आशा करती हूँ हम दर्शक के लिए भी बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ चलेंगे मैम, तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं एंड वील आस्क दोस क्वेश्चंस। Dr. Venkatesh sir, Dr. Venkatesh, if I am audible, please share your question, sir. Please ask your question. Namaste, namaste to you all. I'm Dr. Venkatesh Joshi from London. So we have already a program running under listed from your ATAB, the fellowship program. So we are trying to initiate the programs of dietetics for all the health professionals in National Health Service System or NHS staff members, and as well as to any health professionals who are privately or working in government as well. So for that, I couldn't find the course what you have designed in the website for this dietetics. So should we design ourselves and submit to you for that? To entertain through some university to tie up for our courses with you, or we need guidance for that to start. We are interested to start with Ayurveda dietetics program now. Sir, have you designed the program? Yes, we have. Yes, we have. As you mentioned, like graduates having 800 hours for any health professionals, but how it is applicable to our UK, there are so many like chiropractors are there, osteopaths are there, naturopaths are there, yoga professionals are there, or NHS doctors are there. So many doctors are there who are interested in learning Ayurveda. So we would like to take them to the food as a medicine based curriculum, and which is much available as it is safer and as a Ayurveda point of view to making like ahara, aushadha, whatever the aushadha turn it into by the ahara kalpana with visheshas. And so we have designed some modules. So should we submit those modules for your verification before we go further talking to any university to start this program? Yes, sir. You can submit it for verification, but you need to choose the level for which level you want to have it. Level 1, or level 2, or level 3. You need to thank you, madam. Yeah, once this fellowship program is continuing from August 4th, we are running this program, and we are trying to launch a dietetics program next. Thanks for your continued support for us. Thank you. The thing we mentioned, it should be in running phase. So once it starts running, then only you please register. Yeah. Okay. Thank you, madam. Thank you so much, sir, for your question. Anybody else who has any query, please raise your hand. You can ask your question then. You can also type your question in the chat box and we'll ask the question. किसी की भी कोई शंका है, प्रश्न है तो बताएं।
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम दिस इज डॉक्टर सतवीर गोदारा। मैम मैं खुद CRAV के बारे में और ATAB के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। जैसे मतलब हम CRAV कोर्स में भी परस्यू कर रहे हैं और जैसा कि मैम ने बताया कि ATAB के अंतर्गत जो मान्यताएं हैं और वेटेज देने की बात चल रही है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम अनुपम सर से मिलके भी गए थे इसी मामले में, तो उसके बारे में थोड़ा आप मतलब अपडेट्स अगर प्रोवाइड करवा सकें। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने मुद्दे पे अपडेट्स चाहते हैं या फिर ATAB से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं? मैम ATAB और CRAV तो कोर्स है, RAB से है। मैं ATAB और CRAV कोर्स इन दोनों में क्या मतलब मानता है सही जानकारी? आपकी अलग पैरेलल है, अलग वर्टिकल है। विशाखा मैम विल बी एबल टू गाइड यू मच बेटर। सो मैम CRAV कोर्स आपका जो है वो RAB से जुड़ा हुआ है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इसमें। जो भी इंडिविजुअल लेवल पे कोर्स एक्सेप्ट होगा वो ATAB एक्सेप्ट करेगा। डॉक्टर सतवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी मैम। आपको समझ में Yeah, Vishaka, I would like to add on. जी सर, यस Dr. Vishaka, I would like to add on this. ये जो question is very good. Whether CRAV can come under this ATAB, उसका दो कारण में नहीं हो सकता है। Because CRAV कोर्स है, ये हम इंडिविजुअल गुरु का अपना एक्सपर्टीज को टैप कर रहे हैं। इसमें हम सिलेबस के अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर आप ATAB में जब आते हैं, एक्रेडिटेशन जब होगा, एक सिलेबस फिक्स्ड सिलेबस होगा। वो फिक्स्ड सिलेबस अक्रॉस द बोर्ड होगा। मतलब कायक चिकित्सा में CRAV कर रहे हैं, जो भी बच्चा है वो कहीं भी करे इंडिया में, उनका स्टैंडर्ड सिलेबस एक ही होगा। मगर CRAV का मकसद वो नहीं है। हर प्रांत में अलग अलग वैद्यों ने जो उनका अपना नया टेक्निक है, जो उन्होंने उनका घर से मिला है, उनका मतलब विरासत से मिला है या उन्होंने खुद बनाया है, उनका गुरु से मिला है, वो ज्ञान को हम अगला पीढ़ी तक ले जा रहे हैं। ये सिलेबस प्रोग्राम नहीं है। और जो भी सिलेबस प्रोग्राम के अंदर हम दोबारा CRAV को बांध देंगे तो CRAV का मकसद ही हार जाएगा। तो CRAV इसे लूजली बिल्ड सिलेबस है। एक समझ लो CRAV में हम BAMS ग्रेजुएट को वैद्य बनाना मकसद ये है। हम और एक आपको डिप्लोमा देने का कार्यक्रम नहीं है। ये दोबारा एक पाठ्यक्रम नहीं बना रहे हैं, मतलब फिक्स्ड पाठ्यक्रम नहीं बना रहे हैं। ये पाठ्यक्रम इस लूजली बिल्ड ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें, जो नया चीज सीखें। अगर हम फिक्स्ड टॉपिक दे दिया, सिलेबस अप्रूव करके दे दिया, फिर तो आपको कोई नया टेक्निक नहीं आएगा या पुराना टेक्निक जो वंचित है वो वंचित ही रह जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं आ सकता। दूसरी बात विशाखा ने सही बोला, जो वो कार्यक्रम चला रहा है वो ही कैनॉट बी द एडजुडिकेटर इन ऑफ हिज ओन केस। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। जैसे कोर्ट में जा रहा है, जज अपना केस डिसाइड नहीं करेगा। तो RAB का दो अलग अलग वर्टिकल है, कोर्स पाठ्यक्रम अलग है, ये ATAB अलग है। उसका लीगल एंगल में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो CRAV पाठ्यक्रम उसमें भी हम करा नहीं सकते हैं। तो दो कारण, महत्वपूर्ण कारण है, कि सिलेबस फिक्स नहीं होगा, उससे भी हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है हम इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस में भी हम ला नहीं सकते। तो यही बात, आई थिंक सतवीर यू आर क्लियर। मैं इसमें लाइन जोड़ना चाहूँगी और सर से अनुमति चाहूँगी कि मैं वो जोड़ूँ। जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा को आगे ले जाने के लिए CRAV प्रोग्राम है, तो आप गुरु को एक सिलेबस में मत बांधिए। और कोई और संस्था, ये नहीं कि ATAB नहीं एक्रेडिट कर रहा है तो कोई और संस्था आगे CRAV प्रोग्राम को एक्रेडिटेशन दे, या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे कि हमने डिस्कस करा NCISM है, IMCCF है, उसमें वो एक्रेडिट कर देंगे। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो मोटिव है, जिस वजह से ये CRAV प्रोग्राम रन हो रहा है, वो डिफीट हो जाएगा। प्लस आप एक गुरु को उसके सिलेबस में नहीं बांध सकते। ATAB का एक्रेडिटेशन या फिर किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का एक्रेडिटेशन लेने का मतलब है कि वो एक फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड सिलेबस और फिक्स्ड करिकुलम में उसको आगे लेके जाएगा। तो आई थिंक आपका जो डाउट है वो यहाँ पे ख़त्म भी होता है, क्लियर भी हो जाता है।
एनी मोर फर्दर क्वेश्चंस? किसी और के मन में कोई शंका है ATAB की किसी स्कीम के रिगार्डिंग या कुछ जानना चाहते हैं तो वो प्लीज क्वेश्चन करें, विल आंसर। You can raise your hand or type in the chat box. We will address your queries. Anybody else who has any other question, you may please ask. Dr. Manan has one question. Sir, you may unmute yourself and ask the question. Dr. Madan? Namaskar ji, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Namaskar, very happy to hear your elaboration. Greetings from Cambridge, UK. Thank you, sir. I was listening to Joshi ji's comments, very valuable. Ek to, I have just looked at your website. Ab tak to 16 course you have listed. Do you have any more which are still not in the website? So Ab there tak are to, few more that are in line. They are getting very Acha ji. fast. Yeah. how frequently do you update your web page, ma'am? So it depends on the team's output. Like whenever they are through with the checking and verification, we usually Acha, update acha, very 15 good. or 20 days. Yeah. Very, very, very happy to see the 16 courses, all very exciting. बहुत बढ़िया जी. इसमें is there? I think it is too early to ask this one important question कि आपकी तरफ से थोड़ा proactive efforts कुछ है जी? Are you suggesting some courses for the future? क्योंकि RAV की जो expertise के अनुसार you can make a lot of suggestions कि हमारी तरफ से we feel we have expertise in some areas and we would invite people to think about courses. Sir, I think Ayo sir will like to answer this, sir. Yeah, I'll answer. Sir, Namaskar ji. Namaste, sir. Already 6 courses we already designed. That for the अच्छा. on the advanced accreditation level for program, right from lifestyle, basic principles, then Marna Sikitsa, Panchakarma, like that we have made 6, and we are going on. Recently the technical committee meeting also happened, and we are devising new courses especially for the overseas people, like Ayurveda, herbal dispensers, and that of thing, herbology, some schemes like this. Ramakrishna ji. Pardon, sir? Ramakrishna ji, this is Dr. Yes, Anupam. May I interrupt between you and Dr. Sir, you please explain, sir. अनुपम जी प्रणाम जी. Namaskar. Sorry for interrupting discussion between you and our administrative officer. Since I had been associated in devising all that, basically the purpose of these different courses which we have started and which are further we are taking the group, it depends upon our observation as well as the request from the different institutions we are coming across. So we felt that yes, there is a need of certain more courses other than 6 what Ramakrishna ji, our administrative officer, was explaining about. These courses are definitely, as per you, we understand there is a, for Ayurveda drug dispensing, there is a less defined structure and less defined courses are there. In addition, we are also looking for Marma also. So the moment we get more responses from the takers, this is oriented for those courses which are not covered. The institutions or the persons on the basis of their request and all that, then we go for all that courses, and it is a continuous process. It is a dynamic. What the course documents are also dynamic. They are in nature and the course content. And in addition, it is also the course. The number of the courses are also dynamic. Some more courses are in pipeline, which are in the very initial stage.
and we are discussing. We hope we will take in future also very short. If I could, Srivastava, thank you for elaborating. If I could just थोड़ा और अगर थोड़ा सा background दे दीजिए इसके ऊपर क्यों why I am asking this question. Yeah. There is a हमारी यूरोपियन आयुर्वेद अकेडमी वगैरह वगैरह there are many organizations काफी सालों से चल रहा काम तो इसमें जी एक there is a gap to bridge क्योंकि यहाँ जब बाहर से लोग when they look at Ayurveda they understand it in one way और हिंदुस्तान से when they look outside they understand it slightly differently. So that bridge making needs a lot of dialogue. आप थे वहाँ Netherlands में course जो उसके so you can see that is mostly run by people who understand Ayurveda from the Indian perspective and also understand the local needs. अब वो तो हो गया Netherlands हो सकता थोड़ा English speaking part of Europe. Now WHO Europe के अंदर there are 53 countries. हर एक देश में कुछ और है अलग. The language, the culture is different. Yeah. So the reason for my asking the question is कि if we take our course, RAV courses that are there, और हमारी तरफ से थोड़ा proactive marketing करें इसके ऊपर कि हमारी तरफ से RAV की तरफ से या National Academy of Ayurveda की तरफ से we contact each of the governments because from the National Academy of Ayurveda, Ministry of Ayush, we can contact each of the individual governments of each of these countries to say ki we are RAV, we are running a course. This is an approximate idea of our courses. And we are aware that it needs to be reshaped for each desh. For each of the countries, we need to modulate this. वहाँ अगर थोड़ा सा वो dialogue शुरू करेंगे. So I'm looking at your website. मर्मा चिकित्सा के ऊपर है कहीं डाइट्स जो जोशी जी ने जो बताया डाइट के ऊपर है कुछ but it needs to be modulated for each country. So 53 countries of WHO Europe. हर एक देश में थोड़ा सा अगर हमारी तरफ से थोड़ा वो इनिशिएटिव लें. It is a little bit of work but it can be done and we will be happy to help you here from Europe to help you make that interfacing थोड़ा सा हमारी जो जानकारी यूज करके थोड़ा सा वो इंटरफेसिंग थोड़ा करें उसमें थोड़ा और it will give us a good feedback from the takers कि we are opening a dialogue with the takers also potential takers also. शायद हमारे साथ है जी नवीन गुप्ता जी है लंदन से शायद नवीन जी से भी सुने थोड़ा इसके ऊपर जी अगर आपके इजाजत लेके थोड़ा नवीन जी की सुनेगा. Sure. नवीन जी का नाम जी. Thank you all gurus and all acharyas. Hello. Please go ahead and I will give some insights. श्रीवास्तव जी also appreciate your feedback इस जो हमारी जो सोच है कि थोड़ा हमारी तरफ से भी थोड़ा proactive अगर रहे थोड़ा सा it will give us some more dialogue. Yeah. Thank you जी. We will listen Naveen ji. Yeah. हाँ जी. Thank you very much. Thank you for giving me the opportunity and thank you for proposing my name, Dr. Madan ji. Madan ji is my colleague here in UK. So at this moment I'm speaking from UK, but I have been practicing Ayurveda in Europe and Switzerland for the last 2 decades. And I have been very active running my master classes of Ayurveda. The course which I'm looking at RAV, to be honest, I know RAV from the first day of its inception when बड़े वैद्य जी त्रिगुणा जी ने जब इसका उद्घाटन किया RAV का तो मैं धन्वंतरी भवन पंजाबी बाग में था उस समय और तो मैं सब लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह से और अभी तो नए लोग हैं आप लोग की फेस दिखाई दे रहा है मैं जानता नहीं लेकिन देवेंद्र जी अच्छे दोस्त हैं मेरे सीनियर हैं और बात यह है क्या कहते हैं कि यूरोप में और यूके में और स्विट्जरलैंड में जो मेरा 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये पाया कि नाड़ी विज्ञान का कोर्स मर्म शास्त्र का कोर्स और सात्विक भोजन का कोर्स और आयुर्वेद अध्यात्म का कोर्स
ये 4 courses जो है amongst the whole community here, it's so much interesting topic for them. And what we have learnt all my life for the last 25 years in Europe, people are interested to know about Ayurveda, about Vata, Pitta, Kapha, about Agni, about Dosha, Dhatu, Mala, Vijnanam, and all herbology also. But the major emphasis here, people would like to know more about the Ayurvedic pulse diagnosis, Ayurvedic Marma Vidya, Ayurvedic spirituality in Ayurveda, and Ayurvedic nutrition courses. So something like that. Can you draw some highlight on that, please? Thank you. Thank you, Naveen-ji. I understand. Yes, we met less, but I know you and we are, yes. We met Leiden, I think, Leiden, because Netherlands is my country. So I spent 50 years in Netherlands. So I was there together, and there was a lecture also planned for me, Sattvic Herbs on Mother Nature. So you were there. Thank you very much for attending me, sir. Please tell me, please. Yeah. Really, it is pleasure that you have been interest in RAV and you have been associated in long. It's a really pleasure to us. It's first day, since it's first day of its inception. Yeah. It's a matter of pleasure. It's a matter of pleasure. It should be noted also. Probably we are recording also. That's we got since our natal period we got it. Yes. Now, since the building was done by वैद्य त्रिगुणा जी बड़े वैद्य जी के द्वारा, जब बिल्डिंग का एक सेक्शन था आरवी में जो अखिल भारतीय महासम्मेलन की बिल्डिंग थी, उस दिन वो बिल्डिंग अलॉट हुई, वो उस दिन से मैं साथ जुड़ा हूँ आरवी से. Nice. I quickly jump on the topic now. There are 2 or 3 things are there. What rightly Madanji has also suggested, and you have suggested a battery of the courses which are more in demand and which needs to be designed, tailor-made as per the requirement of the country. We understand. Madanji was placing, yes, we should, we require international promotion, preferably by the ministries, by the government to government promotion. So yes, ministry, just to brief you, yes, ministry is quite enthusiastic in promoting this system because in the promotion we have roped in MEA, External Affairs Ministry, to promote this, and already to best of my knowledge, and a couple of days back, and this thing, the information has gone to all embassies across the globe about this course. What we are doing, it is being done, it is being promoted through MEA, and we are fortunate enough, we have a parent ministry, that is Ministry of Ayush. They are working proactively on this thing and they are pushing. We have also planned to make it, if possible, to make a part of the country to country dialogue when there is, or G2G dialogue when there is, and this is a base as one of the mandatory part of the discussion, how we could promote this informal, you may call, or this unique system of the education or dissemination of the knowledge. My question about the I am coming. I have noted down all your questions, and will try to just give you the glimpse what is happening till today. So number 1, we are working with the MEA through the Ministry of Ayush for dissemination of this thing, and we will try to make roping the country-to-country dialogue. Further, number 2, and we are also looking forward for our international flag holders. May or may not be from the government side. It could be from the private players, who is also the person who has dedicated towards the Ayurveda in the promotion of the system. So we are also open for that. For that purpose, we have signed an MOU with Argentina, distinguished Mr. Luis Vera. So already we have signed an MOU with his organization, and we will look forward how institutions like Kasibla, who could be roped in for the promotion as ambassador, or giving the responsibility, because we have made here a provision for as a third party accreditation. We have also made on a third party basis, so they could also play a role in this accreditation scheme, basic accreditation scheme, including the listing and all that. What probably the speakers have informed you. Regarding the courses, Ayakam courses, what you have rightly said about the Vedic courses, probably Marma we are addressing. We are open, sir. We are open. Any kind of suggestion, which comes from the different courses. That's why we are trying to push in this particular scheme.
time to time on various platform. If it is Vedic sciences, what's your say? That regarding district herbologist course or the drug dispensers, Yes. not drug dispenser, yes, it is need of our, we understand, and we are working on it. For Marma, yes, we are working with the Marma also. We are working for the Marma document also. And yes, we are open to incorporate all such courses. All such courses which are demand. The purpose is very clear. The purpose of this scheme is very clear for those such courses across the border in the country also, which are not being regulated. It is not accredited by anybody. That's why ATAB has given this responsibility as a nodal agency for our sectors. So yes, sir, we are open and we welcome you for your suggestions. Sir, in my own capacity, if there is any issue about the visa, because I can sponsor anybody in Switzerland, I can sponsor anybody in Belgium, which is my home countries. In fact, both are my home countries, and also UK. Everybody knows that. So we can sponsor any program, and so please. That's nice. That's nice to hear. That I think the purpose is very much solved. The purpose is to sensitize and bring the more fresh air and the fresh volume and fresh ideas to RAB to take this forward. Number one. Number two, regarding the procedure of the courses, details of the courses. If you go through the entire scheme, if you go to quality enhancement initiative, what the scheme we have drafted, we have given the provision. We have given the provision. Yes, we ensure that your course is related to Ayurveda. Because to our perception, to our understanding, we have drafted the course. We are also bothered about how the course is being delivered, irrespective of the entire content. It should be Ayurveda content, and content should be definitely Ayurveda. Say, if there is more need, there is a more demand of a certain topics in a certain country, we cannot restrict spreading the Ayurveda in that field. In that field also. So we are open for that. Even if you go to a scheme, we have made a scheme in a manner. Yes, we can accreditate those courses also which are of Ayurveda science, of Ayurveda subject. And I forgot to mention one more thing I forgot to mention, sir, that Ayurveda Sutra course here is also so much popular. People like to learn Ayurveda from sutras. So for example, you start from Samhita or Sushruta Samhita or Ashtanga Hridaya. So people like to learn that and they chant sutras with me. I can show, I know at least 50 people from different parts of Europe who chant Ayurveda Sutra with me in the class, and they are really interested for those courses. Yes, that's nice to hear. That's nice to hear. Sir, what I said, we are open for that. There is no purpose of any barring of all that. Only for ensure how the delivery system is maintained. How the delivery system, how the course is, because it is basically based on ISO 1900. So that's why the purpose is how the course is delivered, and it should be Ayurveda courses. Number two. Or number three, we are open. Sir, we are open. Our administrative officer is there, our experts are there. We are open to make further dialogue on this, what you are suggesting upon. You can write to us. Beautiful, sir. Thank you very much for answering my question, and thank you very much to very precisely answering my question. Thank you very much. Thank you. Open. And I want to utilize this platform again for my own purpose. My own purpose is just we are also RAB has been given the responsibility by the Ministry of Ayush for the endorsements of the practitioners of Ayurveda. Definitely the person like you, or maybe like more than younger to you, your colleagues also, we would be endorsing your credentials. In other words, in a better understanding way, you can say professional standing. If it creates some problem in that country regulation, we can at least endorse yourself. Yes, this expert of Ayurveda had been graduated from the India, from blah 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 university, and we appreciate his credentials for the promotion of the system. So for providing me that certificate in future if I will need that. Yeah, definitely. But I do not know what will. Sir, 1 minute. I do not know whether it will solve any legal purpose or not, because the European courts or European Parliament will never understand this certificate from India. I doubt about it. To be honest, I worked in European Parliament also. I worked with few members of European Parliament, MEPs, and in Brussels, because Brussels is my home country. So, and I know that they are not going to entertain any kind of certificate like that.
understand. I had been Brussels for twice for EU regulations for addressing THMPD issue by the Ministry of Ayush. I have addressed twice that gathering. I understand, but at least we can endorse. We can endorse that this expert is from India, on behalf of Ministry of Ayush. This expert is from India, has a valid credentials. This and I will appreciate if you could sensitize the more Indian experts who are working or who are staying, who are promoting Ayurveda in some other form. There is no charges. There's a very comprehensive way, very easy way we have made, so that we can make such a database which could be further a flag holder for the promotion of our own system across the board. The purpose was this. The purpose was this also. You see, the same thing which I'm discussing with you today about the legalities, I discussed with Shri Jaishankarji when he was the Foreign Secretary. He was in Brussels with Prime Minister Modi at that time. And I had a meeting with Jaishankarji myself when he was the Foreign Secretary. I had explained him every situation what is happening in Brussels at that time. And also Nirmala Sitharamanji was there as a Commerce Minister. So I also explained to her. So I had a chance only to shake hands with Prime Minister Modi ji also, but that's something else. But the point is that from that time onwards, Shripad Nayak ji was there in Netherlands. I discussed with him also in private about the legalities, and until now I don't see any further lead in that direction as far as legalities is concerned. Yeah, this is a big question. We can answer in some other way, other platform. It takes a lot of time and this thing. I think what we are doing, probably the early experts have explained. Madanji, still you want to add something? Because you have raised that. Thank you, Ji. I hope you can hear me. Thank you, Ji. No, I appreciate fully, very happy to hear that you are connecting with Jorge Berra in Buenos Aires, because that is a way also into the Spanish-speaking world, and Jorge Berra ji has been doing a lot of work in Buenos Aires, so I agree there. And what Naveen ji is raising about the challenges, about the discussions with the G2G discussions, I think we have made a lot of progress since in the last 2 or 3 years. Anil Johri ji, who's in touch with us and guiding us in many ways, and in the context of those trade discussions, etc., there will be progress. Srivastavaji, there is one point I want to make here, which is for all of us gathered here. I can see we are a large number of people today. That there is a policy document, in one of the most mature documents we have seen at the G2G level. Is a policy document from May 2021. And in that policy document, at the very end of the document, it articulates very clearly that Ayurveda must be a part of, at least in this India-UK discussions for the future. So that is one opportunity. And I am told that similar policy documents, G2G documents, are in progress with the EU, with South Africa, with North America, with USA, and some other locations in North and South America, with Canada too. We want to congratulate all of you for making this happen. So particularly MEA, and as Naveen ji says, there are people listening to this, but how to speed up, only you can know. Only locally you will know what are the challenges locally. So that is one issue. We can, sitting outside India, we don't know what are the local challenges, understand? So uski taraf se guide us a little bit. They say, Naveen ji, what he is saying, just guidance, where we can help you speed up things. We are happy that also to note there was a meeting, India-UK Healthcare Summit, that was held at the Royal College of Physicians here in London 2 months ago. And that was a very, very important event. But we could have done much more, is the way I would present that. And maybe in the year or two, in the next year or sooner, we should have a separate event if there is enough traction. There is a lot of need for coordinating MEA and High Commission in London and
organizations in other organizations in the UK. But if there is enough appetite and if there is enough traction, then I would suggest that we plan Ayurveda specific or Ayush specific event in the next 12 months for London, where we can showcase all these things. Ek aur cheez, the last one before I give the floor back to yourself. Last point, ये जो यहाँ पे चलता रहता जी हर साल एक यूरोपियन कांग्रेस फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन करके. अच्छा, अब the 14th Congress, last Congress was in London. We had a good set of presentations on Ayurveda. From KLE Belgavi, there was a wonderful presentation on Brahmivati and post-COVID mental health. Something like this with targeted areas. The next event is end of September, early October in Porto in Portugal. The 14th Congress for European Congress for Integrative Medicine. और हमारी तरफ से ये है, one request is थोड़ा सा can we discuss with our mission in Lisbon to request a one hour program or a 90-minute program to highlight National Academy of Ayurveda or RAVP efforts. That will be a very valuable thing, just at the European Congress for Integrative Medicine in Porto. I will send you the details, Srivastaji, so that your team can look at that possibility. There is enough time to coordinate with our mission in Lisbon just to make that happen. Thank you, Madanji. Thank you for rightly intervention and taking this thing. We will be looking forward for your suggestions further and also for the ATAB. As the European Congress is concerned, definitely we push the matter with the Ministry of Ayush also. And once we receive the details from you, and definitely we will push if ATAB along with the RAV could be that platform for the 90 minutes as you suggested. Very nice suggestion and very timely intervention. And we look forward for both of the experts for the as to see how the schemes could be taken forward for the national platform. Now I give form to young ladies, Dr. Vishakha and Dr. Ananya, over to you. If somebody has other questions, then we can entertain, otherwise back to you. Over to you. Srivastaji, if I could take either Vishakha ji's or somebody's telephone number, thoda sa definitely they will call you. Definitely they will call you back. They will text you in person. And then I can share all the details. Take just 1 minute more, please. Don't see me as a critic, but I want to tell you one thing. At the Royal College of Physicians here in London, in Regent's Park, Madanji was present and I was present also. There was talk about Royal College of Physicians from Indian origin, and it was organized by High Commissioner of London. But I want to say to you, and I'm too critic about it, that all the speakers from the allopathic community were so precise, so good. You cannot imagine, from the highest standard in the world. But when it came to Ayurveda, there were 4 speakers, and it was completely zero, -0. So it was a very, very poor show in the history of Ayurveda in London, in the Royal College of Physicians, when High Commissioner of India. So High Commissioner of India must know who are the experts of Ayurveda, who can speak at such a coveted platforms, so they should know about it. And I'm so sorry to say, amongst the allopathic community, from member of Royal College of Physicians, surgeons, obstetrician, gynecologists, psychiatrists, so the poorest show was Ayurveda. And how come it happened when High Commissioner of India is participating in such a way? I'm really sorry to say that, and everybody in the hall was stunned that Ayurveda could not present even in one way a good speaker there. And I'm very sorry for that. So we must never project a figure like that in future for any country, be it be India, be it be outside India, anywhere, please. So Ayurveda should be seen in a dignified way with the right speakers for the right platform at the right time. Thank you, Ravinji. Thank you, Navinji, for raising your apprehension, and thank you, get us graduated what happened in last meeting. Definitely, it
it may or may should not be accepted. Yes, on an international platform, there should be good presentation from the other side. And it definitely Ministry will, you have raised the issue, Ministry will take in cognizance. Mistake of High Commission of India, London. Total mistake. Total mistake. Yeah, we will look forward. We will look forward how same situation is not repeated. I added my grievances to the High Commissioner and all the leaders, and in the High Commission of India here in London, nobody knows what Ayurveda is. And I asked about the person whom I can speak about the Ayush. I went there, I ring the bell there. Nobody entertained, and I knocked the door of 10 people, and even I wanted to make a complaint to Shri Jaishankarji about it, but nobody entertained it. So it's a very sorry state of affairs as far as the High Commission of India London is concerned. Okay. Thank you for this concern, and we will look forward with the ministry. Over to you, Dr. Vishakha and Dr. Ananya. Thank you so much. I believe this has only enhanced our understanding of the matter, and we are very lucky that RAB has so many well-wishers and people who know about Ayurveda, who are associated with RAB in different corners. Sorry. Continue. We have another question from Dr. Ritesh. We'll proceed with that. Dr. Ritesh, kindly unmute yourself and ask your question. डॉक्टर रितेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कृपया अपना प्रश्न पूछें. अनुपम सर हैं. Over to you, Dr. Ananya. Over to you. Thank you, sir. Dr. Ritesh. No, he is not here. Please go ahead. Okay, sir. Okay. Anybody else who has any other question? So you may kindly proceed. I invite all of the questions that might be there in the mind of our attendees after listening to such experts discussing such matters. I think there are no further questions. तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आरएबी के शुभ चिंतक विश्व भर में हैं जो कि कार्य में रत हैं, जिनकी भूख कार्य करने की अभी भी शांत नहीं हुई है. तो उस जाटर अग्नि को दीप्त रखते हुए हम आमंत्रित करेंगे कि डॉक्टर मनीषा वोट ऑफ थैंक्स दें एंड इस सत्र को आगे प्रोसीड करते रहें. It's an honor for me to have the opportunity to propose the vote of thanks on this 104 webinar of Gyan Ganga, Knowledge of Voyage, a webinar series organized by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. On behalf of the organizing committee, I want to express my gratitude to our respected speaker, Dr. Chaka and Dr. Ananya. Thank you, both of you. I'm sure that this will be the first stepping stone for a number of Ayurvedic courses throughout the world. Thank you. I would like to wholeheartedly thank all the speakers around the world who have joined us from London, Cambridge, Brisbane, everywhere. Thank you for making this a very lively and interactive session, sir. Your interaction with us was like a cherry on top of a cake. Thank you, and we're looking forward in welcoming you to India and having a collaboration with you in Europe and UK. I would also like to thank wholeheartedly respected Padma Bhushan Vaidya Shri Devendra Teguna ji, President Governing Body RAB, for his blessings and continuous encouragement. Thank you, sir. I express my humble thanks to Vaidya Manoj Nesri sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, for providing us his immense support and guidance. We are highly obliged to you, sir. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Anupam Srivastav sir and Ramakrishna sir for their constant guidance and motivation. I thank them for their valuable contribution and encouragement in all our efforts. I must thank the organizing team of RAB and the volunteers who have worked behind the scenes for their tremendous effort to make this webinar a great success.
I'm also thankful to all the Gurujans and the participants who are connecting with us throughout the world in spite of their busy schedule. The topic and speaker for the next webinar will be shared with you very soon. Thank you and have a great day.